Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very respectable viewers, today we are going to talk about moral development and psychosocial development of child. And we are looking that what is the role of school in moral development of children. Because school is one of the organization where child live um, with the most of technical time, because the environment is very technical and the personalities are very technical and situations are very technical. So we can say that there should be a good character building suggestions be developed, be disseminated to the children. बच्चों को हाउ टू बी गुड बताया जाना, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड. गुड बता दिया जाए तो उसे अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ नॉट गुड. और बाज़ औक़ात हम अगर उसको एक्सप्लेन भी कर देते तो ज़्यादा बेहतर यह है कि हम उसको गुड की ओरिएंटेशन हम दे रहे हैं. और इसके लिए स्कूल मैनेज कर सकता है. स्कूल के पास बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं. मॉर्निंग असेंबली इज़ अ वेरी बेस्ट way to communicate the good things. If not possible, but assemblies, informal ways of communication in the class is necessary. When the teacher is saying something, because the teacher personality is very nice personality for the child and very accepting personality for the child. और फिर यह है कि when that particular personality is saying something good, oh, that is more acceptable, that is more desirable. और इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस के ज़रिए हम परफॉर्म कर सकते हैं. स्कूल परफॉर्म कर सकता है. स्कूल परफॉर्म कर सकता है थ्रू डिफरेंट मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दैट इज़ बीइंग सेंट टू द पेरेंट्स. या फिर यह है कि बच्चों को कोई ऐसा एक चिट जिसके ऊपर वो मैसेज, खूबसूरत मैसेज डिसिमिनेट किया हो और उसे कन्वे किया जाए, यू टू डिस्प्ले इट एट होम फॉर द अदर फैमिली मेम्बर्स. ओके, दैट कैन बी. और इसमें हम चीज़ों को देख रहे हैं. देयर शुड बी कंफर्टेबल एंड पॉजिटिव appropriate environment of the school. What is comfortable? Where child can express, where discipline is there. Discipline mean to make the individuals in a way that they are comfortable for itself and comfortable for the others. Same like a teacher can develop the classroom environment, permissive environment. In this environment, student can ask any question. I would like to ask this question. Okay, the teacher is accepting, teacher is reflecting and giving reply with the logical way, with smooth way. And the environment is so, if the child is not presenting rightly, that is being accepted and be given some directions. उसको scold करना, उसको accept ना करना, ये उसको नेगेटिव बिहेवियर की तरफ मोल्ड करेगा. तो सो वी टू एनकरेज द स्टूडेंट टू डू गुड. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ आप घर में पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल के काम करें, यस, दैट इज़ हाईली अप्रिशिएबल और दैट शुड बी एडमिटेड एंड बी रिवार्डेड. समटाइम टीचर कैन रिवार्ड, समटाइम पेरेंट्स कैन रिवार्ड. एंड डिस्करेजमेंट एंड टू डू inappropriate things and being punished, it is not as better as the encouragement is better and other things are more better than that. There are certain rules and regulations, those are being made in the school. It is just to make them
that what is right and what is wrong, and it should be done and it should not be done. It is appreciated and it is not appreciated. Okay, and the student comfort is preferred. हमें दूसरों के आसूदगी का ख्याल रखना है, दूसरों के आराम का ख्याल रखना है. वो कैसे रख सकते हैं कि हमें अपने रास्ते पर चलना है. रास्ता चलते हुए हमें उस रास्ते पर चलना है जो हमारी तरफ वाला रास्ता है, और हमें दूसरे रास्ते पर चलकर आवाज़ पैदा करना जिससे दूसरों को डिस्टरबेंस हो, दूसरों की तवज्जो उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, तो इससे अवॉइड किया जाए. दैट इज़ द गुड बिहेवियर वी आर गोइंग टू इनकलकेट इन द चिल्ड्रन, एंड वी टू डेवलप द मॉरल लर्निंग एनवायरनमेंट. ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें लोग अच्छा काम कर रहे हों, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा हो और बाकी लोग उसको देख के सीख रहे हों. और मॉडलिंग इज द बेस्ट वे विच इनकलकेट द ट्रेट्स ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर. और इसमें हम देखते हैं कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट इज मोर अप्रिशिएटेड एंड मोर हेल्पफुल फॉर द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. थैंक यू वेरी मच.